Morning student. Today we are going to start poem 8 of class 4th and the name of the poem is Wind on the Hill. Okay student, so let's start reading the poem and understanding it. Let me read the poem for you. I'll recite the poem for you and you will follow me. Listen to each and every word very carefully and after that try to understand it. Okay student? So let's start reading. No one can tell me. Nobody knows where the wind comes from, where the wind goes. Okay, so what we have to do? First we have to read it loudly, and after reading loudly, what we have to? We have to start understanding it. Okay, so let me recite it for you again. No one can tell me, nobody knows where the wind comes from, where the wind goes. Okay student, so in this poem, the name of the poem is Wind on the Hill. In this poem, what the poet is telling you, the poet is telling you about the wind. Okay student, what poet is trying to tell you? The poet is trying to tell you about the wind. So how wind keep moving, how wind keep flowing. Okay, so what poet is telling? No one can tell me, nobody knows where the wind comes from and where the wind goes. कोई मुझे नहीं बता पाता, ना ही किसी को पता है where the wind come from, wind कहाँ से आता है, and where the wind goes, और ये wind जो है वो कहाँ जाता है. Okay, let's read second stanza. It's flying from somewhere as fast as it can. I couldn't keep up with it, not if I ran. It's flying from somewhere. ये कहीं से उड़ती हुई आ रही है. As fast as it can. इतनी तेज जितनी तेज ये उड़ सकती है, जितनी तेज ये चल सकती है. I couldn't keep up with it. मैं इसके साथ नहीं चल पाता हूँ या नहीं भाग पाता हूँ. Even if I ran. अगर मैं भागूं भी तो मैं इसके साथ नहीं चल पाता हूँ. Okay. But if I stop holding the string of my kite, it would blow with the wind for a day and night. Okay, so student, what poet is telling? If I stop holding, अगर वो क्या करे, poet क्या करे, अपने जो kite है उसके जो string, okay बच्चा, string means क्या होती है? Thread, जो डोर होती है ना बच्चे, डोर. ठीक है, दिस व्हाट इज दिस, जो आपकी जो काइट है उसकी जो है स्ट्रिंग मीन्स ये उसकी डोर. तो जो काइट की डोर है, अगर मैं इसको छोड़ देता हूं तो ये क्या करेगी? ये ब्लो करेगी, ये उड़ती रहेगी दिन रात किसके साथ? हवा के साथ. ओके, एंड देन व्हेन आई फाउंड इट wherever it blew, I should know that the wind has been going there too. और जब मुझे ये काइट जो है मिल जाएगी, ओके, wherever जहां पे भी ये उड़ के जाती है, अगर ये मुझे मिल जाती है तब मुझे पता चल जाएगा कि where the wind was blowing, wind कहाँ को चल रही थी, कहाँ जाने की कोशिश कर रही थी या कहाँ थी. ओके, let's see next. So then I could tell them where the wind goes, but where the wind comes from nobody knows. तो मैं ये तो बता सकता हूँ कि ये विंड कहाँ जा रही थी. डेफिनेटली अगर आप किसी चीज को हवा में छोड़ दोगे तो वो हवा के साथ तब तक उड़ेगी जब तक विंड चलेगी. ओके, सो देन द पोएट कैन टेल वेयर द विंड इज गोइंग, बट still there is a question mark, still there is a question mark in the mind of the poet that from where the wind come from, wind कहाँ से आती है, and the answer nobody knows. Okay student, so this was all about your poem The Wind on the Hill. So student, there are some facts about wind. I want you to read it properly, I want you to understand it, so just go through it. Let's start it. Okay,
Wind refers to the movement of air. So you need to remember what is wind. Wind is the movement of air. Okay, you need to remember it. What is wind? Wind is movement of air. हवा की मूवमेंट को जब हवा चलती है तो विंड का फॉर्मेशन होता है. ओके, नेक्स्ट, व्हाट एनेमोमीटर is an instrument which is used to calculate the speed of wind. Okay, so when wind is flowing, there should be something that through which we can measure the wind. Okay, how it, at what speed it is flowing. So instrument is this. Wind energy is considered to be, see, it is the cleanest and safest source of energy. And what sort of energy it is? It is renewable energy. Renewable means जो कि वापस से बनाई जा सकती है, क्योंकि विंड जब भी चलेगी तो क्या होता है, इस एनर्जी को हम वापस फॉर्म कर सकते हैं, वापस बना सकते हैं. विंड जो है आपका 4% ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है. मीन्स टोटल एनर्जी जितना भी है उसका 4% पार्ट जो है वो विंड कंट्रीब्यूट करता है. सेलर्स जो है इस विंड को यूज करते हैं वाइल सेलिंग द शिप. जब सेलर्स हैं वो विंड जो है विंड का यूज करते हैं अपने विंड को, अपने शिप को सेल करने के लिए. और स्ट्रॉन्गेस्ट विंड इन द सोलर सिस्टम इज ऑब्जर्व ऑन प्लैनेट सैटर्न एंड नेपट्यून. सैटर्न एंड नेपट्यून पे सबसे तेज विंड चलती है. ओके, सो दीज आर द फैक्ट विच यू नीड टू रिमेंबर. Okay student, so this was all. Have read the chapter and enjoyed it. Okay student, thank you student, thanks a lot. Keep studying and keep learning.